Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the course MSCI 024 Part 2. Earlier also we have discussed about the laws, rules, what are the rules the government is following, international laws, international rules, everything we have followed. we have everything we have understood. But here we are going to discuss about what is cybercrime, what is cyber terrorism, all these key concepts all these things we will discuss over here. Okay, I'm your here. I'm your academic counselor, Swarup sir. Okay, let's start. Cyber squatting. Cyber squatting is registering, selling, or using a domain name with the intent of profiting from the goodwill of someone else's trademark. साइबर स्क्वाटिंग होता क्या है मीन्स किसी और का सपोज सोच लो कोई साइट है उसी साइट का नेम से मैं कुछ और साइट बना रहा हूँ किसी का गुडविल है जो साइट सबकी चलती है उस बंदे की उसी नाम पे एक और मैंने साइट बना ली और उसकी गुडविल से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ दैट इज साइबर स्क्वैटिंग या ऐसे भी हो सकता है जब मैं कुछ कोई वेबसाइट का नेम अपने नाम पे रजिस्टर करके रख लिया suppose somebody wants to buy that site that I can sell him at a higher price, so that is also cyber squatting. Everything is written here. Okay, let's go. Cyber squatting is registering, selling, or using a domain name with the intent of profiting from the goodwill of someone else's trademark. Okay, it generally refers to the practice of buying up domain names that use the name of existing business with the intent to sell the names for a profit to this business. Now, check where the domain name takes you. As a general rule, first check to see if the domain name takes you to a website. Suppose कोई website में लिखी गया, if it does not take you to a functioning website, but instead takes you to a site stating this domain name for sale or under construction or confined server, means क्या क्या होता है you are dealing with a cyber squatter. ये जो बंदे होते हैं ये सारे cyber squatter भी होते हैं. The absence of the real site may indicate that the domain name owner's only purpose is buying the name yeah, in buying the name is to sell it back to you at a higher price. जैसे मैंने कहा था वही चीज महंगे दाम में बेचने लेकिन ये भी होते हैं देयर इज इनोसेंट एक्सप्लेनेशन द डोमेन नेम ओनर मे हैव परफेक्टली लेजिटिमेट प्लान भी होता है टू हैव अ वेबसाइट इन द फ्यूचर फ्यूचर के लिए भी वो कॉपी करके रखे हैं वो उस नेम को वेबसाइट के नेम को उन्होंने खरीद के रखे हैं ऐसे भी होता है ओके नाउ वन मोर टर्म इज देयर स्पैम डेक्सिंग ये सब पेपर में आते हैं in digital marketing and online advertising, spam texting or SEO spam is one of the most common hacks to increase search engine ranking. सर्च इंजन रैंकिंग को क्या करते हैं मैंने कोई भी वेबसाइट का रैंकिंग को छेड़खानी करना वो दैट इज स्पैम टेक्सिंग ओके These hacks targeted websites in order to manipulate the success of sites SEO campaign and boost its ranking in Google, Bing, or other search engines. What is SEO spam? Search engine spam or spam indexing is an attempt to manipulate search engine rankings and generate traffic which is used later to fuel a scam designed by bad actors. ठीक है threat actors gain access to a normal healthy website and then inject keywords and links intended to lure traffic to different scams. ट्रैफिक वो क्रिएट करते हैं वहाँ पे ठीक है वो सब जिससे स्कैम्स क्रिएट हो दिस प्रैक्टिस ट्रिक्स unsuspecting users who believe that they are visiting a real website to purchase orders but end up getting scammed. जैसे फिशिंग अटैक होते हैं तो वो सारे स्पैम टेक्सिंग के अंदर ही आते हैं सारी चीजें. You can take a screenshot also, okay, if you wish. Types of SEO spam. Search engine spam can be executed through spammy links, spam जैसे मैंने बोला था spammy keywords, spammy post and pages. Okay, ये तीन तरीके हैं ठीक है. Impact. By gaining access to a legit website and injecting links and keywords, bad actors create a path to their scammy websites. ठीक है. Rather than getting ranked the way most legit websites do, bad actors piggyback off a normal site's credibility to get a rank on search engines. जैसे फेसबुक में बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो मीन्स दैट लीड्स टू स्कैम. बोलते हैं इतने में मिल जाएंगे कोई चीज somebody is selling 1000 की है 20 रुपीज में मिल जाएंगे. दिस टाइप ऑफ ये लोग लियोर करते हैं सारे कस्टमर्स को सो दैट दे कैन गो ओवर देयर एंड दे गेट स्कैम्ड. दैट इज द थिंग. How to stay safe from SEO spam? Run updates, create strong passwords, scan regularly, use a firewall. ये सारी चीजें हैं ठीक है. Run updates means it is recommended to keep plugins and other website applications updated with the latest security patches. Ignoring updates can leave the entire site wide open for an SEO spam injection. Every time इसको update करना होता है
अपडेट नहीं करोगे तो फिर दे विल गेट ए एरिया टू ओके क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो होते हैं स्कैन रेगुलरली यूज ए फायरवॉल फायरवॉल क्या होता है इज एन ऑब्सोल्यूट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट सर्च इंजन स्पैम इन्फेक्शन इट प्रोटेक्ट्स वेबसाइट्स फ्रॉम अननोन थ्रेट्स लाइक स्पीडिंग ऑफ द एफिशिएंसी अब साइबर क्राइम का दो डेफिनेशन है पेपर में आ सकते हैं एक नैरो सेंस में एक ब्रॉडर सेंस में नैरो सेंस में क्या बोलते हैं एन इलीगल बिहेवियर डायरेक्टेड बाय मींस ऑफ electronic operations that target the security of computer systems and the data processed by them. Cyber crimes in a broader sense क्या होता है an illegal behavior committed by means of or in relation to a computer system or network including such crimes as illegal possession offering or distributing information by means of computer system or network. ठीक है तो नैरो सेंस में क्या बोलते हैं behavior directed by means of electronic operations that target the security of computer system and data processed by them. ओके व्हाट इज कॉपीराइट कॉपीराइट क्या होता है कि किसी ने कुछ बनाया ठीक है तो उसको कॉपीराइट करके रखा है ताकि सो नोबडी एल्स कैन यूज दैट फॉर हिज और ओन प्रॉफिट दैट इज अ कॉपीराइट copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works जो मैंने बोला works covered by copyright range from books music painting sculpture and films to computer programs database advertisement maps and teaching drawings there are two types of rights under copyright economic right which allows the right owner to derive financial reward from the use of their work by others ठीक है and moral right which protect the non-economic interest of the author अब सिक्योरिटी पॉलिसीज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है ईआईएसपी एक क्या है आईआईएसएसपी है और एक है एसवाईएसएसपी ओके these are very important let's go in short ASP क्या होता है an enterprise information security policy details what a company's philosophy is on security and helps to get the direction scope and tone for all of an organization's security effort okay कंपनी का फिलोसफी ऑन सिक्योरिटी उसी उसी उसको ईआईएसपी बोलते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट लेवल डॉक्यूमेंट इज रिटन बाय द कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ये लिखते हैं और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और समवन सर्विंग इन दैट कैपेसिटी When completed, the EISP will be used as a roadmap for the development of the future security programs, setting the tone for how the company handles specific security matters. The EISP does the job of explaining the organization's belief on how the security program should be structured. Security policy कैसे structure होंगे as it pertains to the different types of roles and responsibilities that exist in the company's security area that ensure the key information is safe from an intrusion. Into IDS, intrusion detection system में कैसे हम वो उससे बचेंगे कोई भी अदर एंट्री करेगा विदाउट परमिशन तो वो सब चीज के लिए ये एसपी में सीईओ क्या करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी लिखते हैं एंड दैट इज बीइंग फॉलोड एवरीवेयर एक होता है आईएसएसपी Information System Security Policy (ISSP) has been developed to protect the trust and its employees from hazards and threats to ensure business continuity and to minimize any business damage by preventing and reducing the impact of information system security incident. इसमें क्या होता है इसमें ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम हैजर्ड्स एंड थ्रेट्स से बचाने के लिए आईएसएसपी यूज करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी द आईएसएसपी हैज थ्री बेसिक कंपोनेंट्स कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है जो आपका आपका जो अपनी हु यू आर उसको हम कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं जो हम यूज करेंगे इंटीग्रिटी मतलब वट एवर यू आर डूइंग यू आर डूइंग विथ इंटीग्रिटी ओके to preserve adequate security of the information system. Confidentiality क्या protecting sensitive information from unauthorized disclosure. That is confidentially. Integrity क्या safeguarding the accuracy and completeness of information and computer hardware. Availability क्या ensuring that all vital services, information or data systems are available to users when required. So this is ISP. These are the key components of ISP. Confidentially, integrity, availability. Short में क्या बोलते हैं CIA भी बोलते हैं CIA. उसके बाद एक है सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी systems are modified as standards and procedures which are used when configuring or maintaining systems. System specific policies fall into two groups: ACCL, access control list, configuration rules. Okay, yes, access control list क्या होता है? Is a list of access rights that is used to determine who may access an object which it controls. Okay,
List of access rights, किसने किसका क्या access है, everything is defined over there. Our configuration rules is a specific codes entered into security systems into to guide execution. This is execution. अब एक्सेस कंट्रोलर्स क्या होता है, इंक्लूड्स यूजर एक्सेस राइट्स मैट्रिसेस एंड कैपेबिलिटी टेबल्स व्हिच गवर्न राइट्स एंड प्रिविलेजेस. ओके, कैन कंट्रोल, ये पूछते हैं पेपर में, व्हाट एसीएल का क्या क्या होता है, फीचर्स क्या है. कैन कंट्रोल एक्सेस टू फाइल स्टोरेज सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट बुकर्स और अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस. एसीएल एनेबल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस इन अकॉर्डेंस टू यूजर कंप्यूटर टाइम ड्यूरेशन एटसेट्रा. मैंने कौन से यूजर क्या एक्सेस कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एसीएल में. Capability table, similar method which specifies which subjects and objects users or groups can access. Specifications are frequently complex matrices instead of simple lists, or rules policies are specific to operations of a system than ACL. Several security systems require specific configuration scripts telling systems what actions to perform on each set of information which they process. अब एक्चुअली ये होते हैं राइट्स होते हैं. राइट्स को हम लिख सकते हैं RWX भी लिख सकते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट. ओके, रीड राइट एग्जीक्यूट. इससे क्या है, एक्सेस वेज, कैसे एक्सेस कर सकते हैं. कोई रीड कर सकता है, कोई राइट कर सकता है, कोई एग्जीक्यूट कर सकता है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. रीड प्लस राइट हो सकता है, रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, या सिर्फ एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है, या रीड होंगे या राइट होंगे. दिस इज द वे. नाउ कॉन्फ़िगरेशन. Specific configuration codes entered into security systems to guide execution of systems when the information is passing through it. Okay, rule-based policies are more specific to system operation than ACL and can or cannot deal with users directly. Okay, तो ये आप लोग करोगे. आगे है सोशल मीडिया अटैक. सोशल मीडिया अटैक क्या क्या होता है, एक होता है फेक प्रोफाइल. ये तो आप लोगों को पता ही है, फेक प्रोफाइल बना के दूसरों को बुद्धू बनाना या कुछ हरकतें करना, बदमाशियां करना, जो पीपल डू. या कॉम्प्रोमाइज प्रोफाइल. एक होता है मेलिशियस लिंक्स एंड कंटेंट. मेलिशियस लिंक्स एंड कंटेंट तो होते ही है. एक होता है सोशल इंजीनियरिंग. लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी अटैक. ओके, fake profile. Cyber criminals are getting more ingenious with their tactics. By using a social media profile, they are capable of copying a legitimate profile and perform small and large scale attacks. Fake profiles can be used to mimic real public figure profiles to distribute mass malware or phishing campaigns to their followers or contracts. ठीक है. Through fake profile, cyber attackers can also copy the real social media profile of key individuals within a target company or business. For example, using a fake profile of a CEO, these cyber criminals can perform catfishing attacks and ask for personal or sensitive information about the organization. They can also instruct an employee to do something that could disrupt business operations or put somebody in a compromising position. One example of this kind of social media attack involves a man called Spas Vasilev who created a fake account under the name Alexander Nikolov and used the fake ID to scam people. तो फेक प्रोफाइल से क्या क्या होता है आप लोगों को पता है. लड़का लड़की बन के भी बेवकूफ बनाते हैं लड़कों को, दूसरे लड़कों को. दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन फेक प्रोफाइल, थ्रू फेक प्रोफाइल. एक होता कॉम्प्रोमाइज प्रोफाइल. वेरीफाइड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स are also likely the target of this type of attack. A compromised profile could be used to expose the customers of a brand to malicious content. This attack is similar to brand hijacking and can be very damaging as it can also negative impact on an organization's website. Okay, corporate profile. Malicious links तो आपको पता ही है, मैंने बात किए थे वहाँ पे. लिंक से फिशिंग करते हैं. एक और सोशल इंजीनियरिंग. use psychological manipulation to carry out this type of attack. With social engineering, unsuspicious users are lured into sharing confidential or sensitive data via social media, email or other communication. वैसे करके सोशल इंजीनियरिंग करके भी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते लोगों को. रिकॉग्निजेंस.
ये क्या है, more social media users nowadays are open or to sharing a lot of personal details about themselves, making them easy targets of a reconnaissance attack. Cyber attackers or threat actors can collate and analyze users' profiles, relationship behaviors, hobbies, and more. Then use those information to craft enticing messages and other lures. Okay, the recurrent attack can be performed massively on social media and is difficult to detect. It is difficult. Okay, users wouldn't know that threat actors are already using their information to authenticate or access other services or accounts such as online banking. ये सारे रिकॉग्निशन में होता है. Okay, you should go through it. स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. Now we go to digital signature. ये तो हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे शायद. The digital signature is a technique which is used to validate the authenticity and integrity of the message. The digital signature is a technique that is used to validate the authenticity and integrity of a message. We know that there are four aspects of security: privacy, authentication, integrity and non repudiation. प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी तो पता ही है. नॉन रेपुटेशन मतलब आप जो हो वही हो, आप बोल नहीं सकते आप नहीं कोई और किए है. ठीक है, दैट इज नॉन रेपुटेशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर थ्री एस्पेक्ट्स कैन बी अचीव्ड यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर तो यू कैन नॉट से दैट यू हैव नॉट सेंट इट. Is to sign a document. When we send a document electronically, we can also sign it. We can sign a document in two ways: to sign a whole document and to sign a digest. Okay, signing the whole document. In digital signature, a public key encryption technique is used to sign a document. However, the roles of public key and private key are different here. The sender uses a private key to encrypt the message, while the receiver uses the public key of the sender to decrypt the message. Just the opposite over here. In digital signature, the private key is used for encryption, while the public key is used for decryption. ये सब दिमाग में रखो, ये पेपर में आएंगे, आपको बोलना है. Digital signature cannot be achieved by using secret key encryption. डिजिटल सिग्नेचर इज यूज टू अचीव द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट्स. एक है इंटीग्रिटी, एक होता है ऑथेंटिकेशन, एक होता है नॉन रेपुटेशन. ठीक है, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, ये आप लोग थोड़ा देखो खुद. ऑल्सो प्रोवाइड नॉन रेपुटेशन इफ ए सेंडर डिनाइज सेंडिंग द मैसेज, जो मैंने बोला था. देन हर प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू हर पब्लिक की इज टेस्टेड एज द प्लेन टेक्स्ट. दोनों को चेक करेंगे. इफ द डिक्रिप्टेड मैसेज इज द सेम एज द ओरिजिनल मैसेज, देन वी नो दैट द सेंडर हैज सेंड द मैसेज. ऐसे करके हम चेक कर लेंगे जी नॉन ये ओरिजिनल बंदा है या कोई और बंदा है. ठीक है. What is meant by data? Document, documentation, logs, and records. ये क्वेश्चन में आए थे पेपर में. Incomplete data is information that has been translated into a form that is efficient for movement or processing. That is data. That is process data है ये. This is not raw data. Raw data अलग होता है, जो कोई भी data आ गया उसका अब मैं processing करके जो data होता है that is data. This is process data. Relative to today's computers and transmission media, data information converted into binary digital form. It is accepted for data to be used as a singular subject or a plural of subject. Raw data is a term used to describe data in its most basic digital format. ये तो मैंने बोला था raw data क्या होता है. अब document. Document is a form of information that might be useful to a user or set of users. The information can be in digital and non-digital forms. Accordingly, a document can be either digital or non-digital. Different methods are used to store digital and non-digital documents. ये तो पता ही हम लोग को. अब डिजिटल डॉक्यूमेंट कैन ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटाबेस, उसको भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट डील विद द मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट. स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे जो कटे हुए थे ये मैंने लिख दिया यहाँ पे. अब डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इज एनी कम्युनिकेबल मटेरियल दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और इंस्ट्रक्ट reading some attributes of an object, system और procedure such as parts, assembly, installation, maintenance and use. डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे कोई भी नया डिवाइस लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिखा होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखे रहते हैं. असेंबली, इंस्टॉलेशन, पार्ट्स के बारे में, मेंटेनेंस कैसे और यूज कैसे करना है, एवरीथिंग. दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन. As a form of knowledge management and knowledge of organization, documentation can be provided on paper, online, or on digital or analog media, such as audio, tape, or CDs. Examples are user guides. User guides, you can say user guide, okay? White paper, online help, and quick reference guides. Document is often distributed via websites. ये very important बात है. By websites. उसके बाद है log file. Log file are the primary data source
for network ability. A log file is a computer generated data file that contains information about usage pattern, activities and operations within an operating system. लॉग कौन सिस्टम में लॉग इन किया था, कितने बजे किया था, वो सारे लॉग में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली. अब होता है रिकॉर्ड इज ए डेटा स्ट्रक्चर. क्या होता है रिकॉर्ड और रो डेटाबेस सेट ऑफ फील्ड्स इन अ डेटाबेस रिलेटेड टू वन एंटिटी, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं. बूट सेक्टर और बूट रिकॉर्ड यूज टू स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको भी रिकॉर्ड बोलते हैं. स्टोरेज रिकॉर्ड, बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर, उसको भी रिकॉर्ड बोलते हैं. ओके, तो रिकॉर्ड ये हो गया. अब आ गया साइबर टॉट. Cyber tort can simply be described as tort or violation of a right done over cyberspace. Example cyber tort क्या है? Email and text harassment, cyber stalking, dissemination through the internet of obscene, of offensive or prohibited material, inclusive of indecent exposure and pornography, defamation, online impersonation, taking unauthorized control or having unauthorized access over computer system, hacking, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये सारे साइबर टॉट के एग्जांपल्स हैं. दिस थिंग्स. ओके, तो हम लोग को सब पता था लेकिन ये टर्म नहीं पता था साइबर टॉट, तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया. वायलेशन ऑफ राइट डन ओवर साइबर स्पेस. ओके, रिजल्ट फॉर ऑकरेंस ऑफ साइबर टॉट क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर डेटा इज टू स्मॉल, ईज ऑफ एक्सेस, ईज टू एक्सेस, इजीली एक्सेस हो जाता है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम नेग्लिजिबल, लॉस ऑफ एविडेंस. Modes and manner of cyber committing cyber hacking, theft of information, email bombing, data diddling नहीं, data diddling. डेटा डिडलिंग, डेटा डिडलिंग शायद हम लोग 224 में पढ़े थे, 222 में पढ़े थे शायद. डिडलिंग क्या होता है? हम क्रिएट करते डेटा, फेक डेटा, दैट इज डेटा डिडलिंग. यू कैन से इट इज फेक डेटा. Salami attacks, denial of service attack, virus, logic bomb, trojan attack, internet time theft, web jacking. Okay, तो ये सारे चीजें हैं. ठीक है, each and every term I think you all are familiar with. That's why I'm not saying anything over here. Difference between cybercrime and cyber tort. Cybercrime क्या होता है? Include hacking, cyber terrorism, distribution of pirated software, harassment through email, dissemination of obscene material, defamation, etc. Cyber tort क्या है? Cyber stalking, breach of privacy, create cyber obscenity and cyber defamation. सारे इंपॉर्टेंट है ये सारे. आप लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके, यही नोट्स है. दिस इज द नोट्स यू हैव टू गो रेफर. अब साइबर टेररिज्म, इट इज यूज्ड it is the use of internet to conduct violent acts that result in or threaten the loss of life or insignificant bodily harm in order to achieve political or ideological gains through threat or intimidation. Okay, इसको साइबर टेररिज्म बोलते हैं. कोई मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज के थ्रू से भड़काऊ बयान या कुछ भी होते हैं, तो क्या होता है? उससे झगड़े होते हैं, उससे उससे किसी का जान चली जाती है. दोज आर ऑल साइबर टेररिज्म. ओके, act of deliberate large scale disruption of computer network, especially of personal computers attached to the internet by means of tools such as computer virus, computer worm, phishing, malicious software, hardware methods, programming scripts can also be a form of internet terrorism. Okay. Now, what is time stamping and how does it work? Time stamping is a mechanism that enables you to record the date and time of an event. उसको time stamping बोलते हैं. That enables you to record the date and time of an event at a time when companies must exchange multiple documents digitally. Time stamping enables you to keep a record of the exchanges. Okay, you must also ensure that the data and the time preceding a digital signature are certified and have not been changed. Here is all you need to know about time stamping and more specific about the certified time stamping. The time stamping is authority. Timestamp authority uses the public key infrastructure. Here are the various steps of procedure. PKI, आप लोग थोड़ा ये देखोगे, इंपॉर्टेंट है ये. पब्लिक की जो ये करते हैं, जो जनरेट करते हैं. आफ्टर बीइंग created, a hash value is sent to the TSA, okay, by the client application in the same way as the unique identifier. From then on, any change that is made to the file is communicated to the TSA server. TSA, cyber. टिकट जो जनरेट करता है वही है TSA. लेट मी सी.
TSA in cyber. One sec, I'm looking into it. Cyber security. Transportation Security Administration. This one is Transportation Security Administration. Okay. Security Administration by the client application in the same way as a unique identifier. From there on, any change, वो सारे communication कैसे होगा? TSA से होगा. The timestamp authority combines the hash with other information which includes the reference time. The result is then signed digitally by the TSA's private key. A timestamp token is then sent to the client. This token, which contains the important timestamping information, is received by the client's application and then saves it to the document or code signature. ये सारे methods है, ये सारी चीजें हो रहा है टाइम स्टैम्प में. I hope it is clear. When you open the timestamp file and the client application the client authenticates the TSA and check the timestamping comes from a trusted TSA. Trusted TSA से भी होना चाहिए, fake भी हो जाते हैं. Data hash is then concluded to be compared to the original one. डेटा हैश एक हैश फंक्शन होता है, उसको उससे हम क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं और उसको ओरिजिनल वन से कंपेयर किया जाता है. इफ इट appears that the data has been modified after the file type, alert messages are generated. यदि कुछ मॉडिफिकेशन हुआ उसका मतलब क्या होगा, अलर्ट मैसेज जनरेट होगा. और यदि मॉडिफाइड नहीं हुआ माने सेम है, उसका मतलब इट्स ओके, इट इज फ्रॉम द जेन्युइन पर्सन. Now, role of cyber forensics in cybercrime investigation. This is also important. As cybercrime is increasing, there is a robust need of cyber forensic experts in all industry models, and more importantly, among law enforcement agencies who rely on cyber forensics to find cyber criminals. Cyber forensic investigators are the experts in investigating of the encrypted data using various types of softwares and tools. ऐसे नहीं जाके पकड़ लिए चोर को, ऐसे नहीं, सॉफ्टवेयर और टूल से ही पकड़े जा सकते हैं. There are many upcoming techniques and investigators use depending on the type of cybercrime they are dealing with. The tasks of cyber investigation include recovering data file, cracking passwords, finding the source of security breach, etc. Once collected, the evidence is then stored and translated to make it presentable before the court of law or for police to further examine. उसके बाद पुलिस आगे देखते रहेंगे. The aim of cyber forensic is to preserve evidence in its most original form so that a structured investigation can be performed to reconstruct past events. एक होता है what is web crawling. Okay, web crawling is the process of indexing data or web pages by using a program or automated script. These automated scripts and programs are known as multiple names, including web crawler, spider, spider bot, and often shortened as to crawler. Web crawlers copy pages for processing by a search engine, which index the downloaded pages so that the users can search more efficiently. The goal of a crawler is to learn what web pages are about. This enables users to retrieve any information, one or more pages when it's needed. Fast होते हैं ये. Crawlers start their crawling process by downloading the website's root.txt file. The files include site maps that list the URLs and the search engines can crawl. That the search engine can crawl. Once web crawlers start crawling a page, they discover new pages via links. Okay, these crawlers add newly discovered URLs to the crawl queue so that they can be crawled later. Since pages change regularly, it is also important to identify how frequently search engines should crawl them. ये भी एक बात है, चेंज होते रहते हैं ना, तो फिर how frequently it should search, that is also important. Search engine crawlers use several algorithms to decide factors such as how often an existing page should be crawled and how many pages on a site should be indexed. जो भी कितने बार crawl करेगा, कब crawl करेगा, ये सारे के लिए algorithms भी हम use करेंगे. ठीक है. अब एक होता है पेटेंट क्लासिफिकेशन. पेटेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है, इज ए वे ऑफ डिफाइनिंग द टेक्निकल फील्ड ऑफ एन इन्वेंशन. एक पेटेंट हो गया, इसकी कॉपी आप नहीं कर सकते हो. एट प्रेजेंट द टू मोस्ट पॉपुलर पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन IPC and the cooperative patent classification. The patent classification helps you to conduct searches in our databases. The classification allows you to restrict your search to a particular technical field and to keep the number of search results at a personal level. पेटेंट आपको पता ही, दिस इज द पेटेंट क्लासिफिकेशन. ओके, तो दैट्स ऑल. इसके बाद बाकी जो थोड़ा मोड़ा है वो आप लोग देखोगे. यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए ओवर हियर. ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.